This is what people say after buying very expensive foundation. Hey Bhagwan, kya kiya? Hey Bhagwan, kya kiya? We have been looking for a good value for money, good coverage, suitable foundation from quite some time. But have we got our favorites yet? Maybe yes, maybe no. सर्च जारी है और इसी खोज के अंतर्गत आज हम ट्राई करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू फाउंडेशन. Yes, today we are going to try and get more insight about this foundation, which is from the same brand called Insight. Yes, in this video I am going to try and talk about this amazing looking Insight ultra thin second skin long wear foundation. तो आज के इस वीडियो में हम इस फाउंडेशन को अपने स्किन पे ट्राई करेंगे एंड वी विल सी द कवरेज, लॉन्जिटिविटी, द टेक्सचर, ईज ऑफ यूसेज, ब्लेंड करने में कितना आसान है कि नहीं है, फॉर्म फैक्टर, ऑक्सीडाइजेशन कितना है, शेड टाइप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुकिंग फाउंडेशन है जो कि मात्र सिर्फ 175 यानी कि 175 रुपये में मिलता है और आजकल ये ब्रांड मार्केट में काफ़ी हलचल मचा रहा है. सो आज के इस वीडियो में हम ट्राई करने जा रहे हैं दो डिफरेंट शेड्स ऑफ दिस ब्रांड न्यू इनसाइट फाउंडेशन. दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बट यू नो ऑफ लेट इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ स्टर इन द मार्केट. Have been asking me to talk more about the more affordable beauty products, and that's the reason that these days I am working and bringing more and more economical, affordable, especially Indian beauty products for you all. So here I am squeaky bare face. I have applied some creamy moisturizer after the shower. Here are the two different foundations from this brand. The first one on my left hand is this number 03 Sun Beige, and on my right hand I have the 04 Warm Nude. So what I am going to do is that on the left side of my face I am going to apply Sun Beige and on the right side Warm Nude. I generally don't like this dropper kind of bottles because sometimes it becomes very difficult to extract products with them. There are a lot of product wastage. This form factor actually reminds me of dry sugar. So I applied both the foundation on each side of my face. On my left side I have the Sun Beige number 3. On my right side I have this Nude Warm number 4. Yeah, so now with the help of a blender and a brush I'm gonna blend it all. Okay. There's a very mild kind of fragrance to it. I'm not going to use it as a concealer now, but just going to apply it as a foundation. So it's quite easy to blend. As you have seen, I've applied quite a generous amount of foundation on my face. Should I use the same blender other side? It's better than the brush, I guess. This is what people say after buying very expensive foundation. Hey Bhagwan, kya kiya? Paise. Just kidding. I mean, it's high time we should stop associating price and quality. It's not important that everything which is expensive need to have a great quality and vice versa. So as you can see, this is more of like a natural BB cream blending kind of a shade, like a very no makeup kind of look, and this one has some coverage. Just gonna blend it, come back, save your time.
So I have finished blending both the foundation at the two different sides of my face, and here's the final result. It is looking quite beautiful and clear in the camera, but if I see in real life in my mirror, this is like okay, this is more like I applied some light color compact or so. So the coverage is not high, forget high, the coverage is bare minimum. Actually, I haven't applied any kind of corrector deliberately, because the job of foundation is to even tone, you know, the your skin tone, and make a very smooth and a very, you know, same tone kind of a base. So well, I'm not very happy with this base actually, to be very honest, because I did not see any greater difference. There's a little bit of patchiness because I used a wet beauty blender to blend it, and I have drenched that beauty blender in a very nice natural mist. Yet I could see quite some, you know, not so smooth lines of finishing around my face, especially at the edges. I've tried to blend that, but they are looking like okay and not giving me a great satisfaction. Somehow, you know, I am still confused between these two shades, which is looking better on my face. Do let me know what you think. Yeah, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि मुझे दोनों शेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, विच शुड नॉट बी द केस, बिकॉज इस वाले का सन बेज का थोड़ा सा येलोइश वार्म येलोइश यू नो बेस टोन है, क्योंकि मेरी स्किन का भी थोड़ा सा येलो अंडरटोन है, और इस वाले का थोड़ा पीची अंडरटोन है, और ये भी मेरे स्किन पे ठीक ही जा रहा है सो फार। कवरेज दोनों नहीं दे पा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन टोन दोनों नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, अगर आपको नेचुरल वियर टाइप्स चाहिए रेगुलर के लिए, डाइल्यूटेड काइंड ऑफ अ थिंग, हल्का सा लाइक अ बीबी cream or a powder, then this is interesting enough, but then why would you not use those products? बेस आपका हैवी हो जाता है, और एवरीडे में इट्स नॉट पॉसिबल, गुड फॉर ओकेजन्स एंड ऑल। Final look after applying some makeup, little concealer on top of it, and like जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे दोनों साइड ऑफ फेस में कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मैंने दोनों साइड पे सेम मेकअप ही यूज़ किया है। अगर आपको कोई डिफरेंस बेज शेड में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। So let me quickly sum up my honest opinion based on my experience and usage thus far. Like I said, this is not the first time मैंने इसको यूज़ किया। I think मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में इन दोनों को ट्राई किया था, जस्ट ऐसे मेकअप के लिए लगाया था। बट डिफरेंस ये था कि तब मैंने थोड़ा सा करेक्टर भी यूज़ किया होगा, जो कि आज मैंने नहीं किया था। तो फॉर्म फैक्टर इंटरेस्टिंग है, ग्लास बॉटल है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी लगता है। बट अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, टूट गया तो सब बिखर जाएगा। यू नो, ये जो ऐसे ड्रॉपर वाले फाउंडेशन में आपको क्वांटिटी समझ में नहीं आती, यू डोंट नो कि कब है ख़त्म हो गया और उसको कैसे निकाले। बट इट इज़ बेटर देन द प्लास्टिक, एटलीस्ट प्लास्टिक है ऊपर में, उसको तो ग्लास से नहीं बना सकते। बट अदरवाइज मुझे इनका प्रपोजिशन भी काफ़ी अच्छा लगा। दे आर क्रुएल्टी फ्री, ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन ब्रांड है, ये दूसरी बड़ी बात है। इकोनॉमिकल है इस रेंज में आपको, जैसे मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई शुगर, इफ आई हैव टू कंपेयर, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट मुझे सेम लगा यूज़ करने में। केमिकल कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकती है, तो उसका प्राइस और इसके बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके प्राइसिंग में आप इसके 3 कम से कम ले सकते हो। एंड सो प्राइसिंग इज़ रियली गुड, काफ़ी हाई पेनिट्रेशन प्राइसिंग है ये। प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना ही बॉक्स पे है, ना ही उनके वेबसाइट पे है। सो दैट्स अ वेरी बिग नेगेटिव एंड अ वेरी बिग नो फॉर मी। द ब्रांड क्लेम्स दैट ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, बट समहाउ आई फील दैट ये फुल हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है। इसका कवरेज ओके है, नेचुरल फिनिश है, डेली वेयर में आप इसको लगा सकते हो। सी, दिस इज एब्सोल्यूट डे लाइट, सनलाइट। आपकी स्किन टोन अनइवन है तो देन यू हैव टू रिकंसिडर।
ये फाउंडेशन लाइक एनी अदर फाउंडेशन डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होता है। रही बात मेरी रिकमेंडेशन की, 175 में ट्राई करके देख लो, अगर आपका शेड सही मिल जाए तो क्या ही बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, फाइंड इट यूजफुल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कोई फीडबैक है तो मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो मुझे बताइए कि व्हाट कैन आई डू जिससे आपको ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे, किस तरह का कंटेंट और किस कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं इसमें देना भूल गई हूँ या मिस आउट कर गई हूँ। सो आई वुड बी रियली ग्लैड टू गेट योर फीडबैक। Until next time, stay safe and keep wearing mask. Ciao. Let's start from the form factor.